Okay, so welcome everybody. So as we regularly do, this is a market session, market update session, wherein we are going to analyze various events in the last week, then various upcoming events. What are the levels expected in Nifty and some important stocks. Also, we will look at global market, what is going on in the global market. Okay, so that basically prepares us for the upcoming 1 or 2 weeks, and we can take actions accordingly. कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, लॉन्ग पोजीशंस लेना चाहिए, शॉर्ट पोजीशंस लेना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए. So all that decisions, all those decisions you can take based upon this analysis, right? So let's move. So looking at the current bullishness in the market, I am getting calls from friends and clients and people asking or trying to understand whether Nifty is heading to 26,000 or new all-time high. Okay, that is the question in the mind of a lot of people. And the market was very low in March. People were selling at the lower levels. And now when the market is going higher, people are buying, doing some fresh buying at a higher level. So that is what typically happens in the market, especially by the retail investors who have not done any proper study of the market. They just go by the news flow. So let us see. I will not say right now yes or no. Let us analyze the charts. Charts will give us some clarity on that. So Trump is moving the market, then India-Pakistan events are moving the market, then various actions by Fed and various data points from the US market. Like last week, the US GDP data was below expectations. So that created some problem for the US market. So all this is going on. So let's see how it is affecting the charts. And then we'll look at the dollar movement and gold movement also. So as we normally do, what we are going to discuss in detail, we'll analyze Nifty, Bank Nifty levels from the support and resistance point of view for the upcoming weeks. Then we'll also look at SPX and Nasdaqs. SPX is the major index in US and Nasdaq is again the major tech index in US, right? Then of course we'll look at a dollar index, then bond yield, US bond yield, then WTI crude oil movement, and then movement in gold prices. Okay, and then important past and upcoming events. Then we'll look at some momentum stocks, and I'll be happy to take some questions. Okay, do you have any questions related to the market? Please feel free to ask in the chat box. So before we move, a quick background about myself. So my name is Ritin Chaudhary, and I'm director at this firm RGS Consulting. I'm founder and director at RGS Consulting, and RGS is into business from 2017, and we are successfully helping our clients to grow their wealth. We have clients all over the world. No, I mean, in India, of course, we have clients, and all over the world, we have clients. Our specialties include stock market, of course, then private equity, and then we also deal in cryptocurrency, commodity, etc. Prior to starting this firm, RGS Consulting, I worked in the IT industry for almost 15 years. So that's a quick background about myself. So let's discuss. So first we'll look at the global analysis. We'll look at the global indices. Okay. So let's look at from the pure bear chart point of view on weekly basis. Let's start the analysis from the higher time frame.
That gives us a good clarity. Okay. Now, if we look at here, SPX is close to resistance level on weekly. Okay. So there was a good rally from 7th of April, from the week of 7th of April when Trump announced those global tariffs, and then there was a rollback and all those things. So there was a bottom in April 7th April week, and after that there has been continuous rally. Okay, and as you can see that this particular 21st April week candle, it is a bullish engulfing candle. Okay, this particular 14th April candle has been completely engulfed here, and then as a consequence, we know in technical analysis, bullish engulfing candle is a bullish candle. So next week is expected to be bullish. So as per the expectation, next week was bullish, and there was a good almost 3.3% movement in SPX. Okay, तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट सब ग्लोबल मार्केट्स में रैली आया, इंडियन मार्केट में भी रैली आया. But now it's getting close to resistance. Okay, तो ये strong resistance zone है 5720 का. Okay, so it is possible that we might see some correction in the US market next week. Okay, it might do little bit of a rally, and after the rally there will be some dip in the market. It is possible. So maybe towards Tuesday, Wednesday, US market might give a dip. अभी Tuesday, Wednesday का हम जब बात करते हैं, तो there is a major event in US. FOMC meeting is there in first week of May, so I'll give the dates for that. So that will definitely have a large bearing on the US market. Okay. So net SPX continues to be bullish, but अभी थोड़ा profit booking यहाँ पे आ सकता है towards Tuesday, Wednesday, and अगर वो profit booking आता है तो it's quite possible that other markets might also undergo under pressure. DXY की अगर बात करते हैं, again let us look at the air chart. DXY is a dollar index. Okay. So there was a huge fall in DXY in the week of 21st of April, but from there it is doing a recovery. Okay, dollar index will be recover हो रहा है after the sharp fall, and maybe this recovery will continue. And if the dollar index recovery continues, again the Fed meeting is there in the next week. उसका भी इसके ऊपर बड़ा major impact रहेगा. So let's see whether it continues the recovery or it falls further. गोल्ड का चार्ट अगर देखते हैं, gold has given a pullback. Last 2 weeks have been red for gold to a very strong rally. अभी गोल्ड भी सपोर्ट लेवल पे आया है after this correction or dip. Gold has come to the support level, and if you see, it has given little bit of a recovery last week. So possibly next week gold will give some kind of recovery. Gold अगर recovery दे रहा है तो it is quite possible that the stock market, the US stock market might give a little bit of a dip. तो ये नॉर्मल सिनेरियो में क्या रहता है कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर स्टॉक्स गिरते हैं तो गोल्ड बढ़ता है, अगर स्टॉक्स बढ़ते हैं तो गोल्ड गिरता है. ओके, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इन नेक्स्ट वीक गोल्ड इज राइजिंग, देन करेक्शन इन स्टॉक्स इज पॉसिबल. तो देखते हैं इसका मोमेंट, देखते हैं. लेट्स सी इफ इट गिव्स अ ब्रेकआउट. इट इज फॉर्मिंग अ फॉलिंग वेज. ओके, फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है गोल्ड के ऊपर. कैन यू सी फॉलिंग वेज? आई कैन जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू. फॉलिंग वेज जो है, इट इज अ बुलिश पैटर्न. Not exactly a falling wedge here. Not a wedge, but this is a descending channel which is getting formed. Descending channel का मतलब ये होता है कि it's a correction within a rally. Okay, and it's quite possible that gold might give a dip towards 3180. 3180 के आसपास से और नीचे जा सकता है, तो वहां से रिकवरी देगा यहाँ पे around 3300 level, and if it crosses the 330 level, then we can see new higher high in gold. Okay,
तो यहाँ पे अगर किसी गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन लेना है तो अराउंड 3180 के आसपास गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो. दैट विल बेसिकली गिव अस अ गुड क्लैरिटी अबाउट द मार्केट डायरेक्शन. देन लुक लेट अस लुक एट क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल भी डाउन ही चल रहा है. इट इज क्वाइट बेरिश. अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो क्रूड ऑयल और नीचे जा सकता है. इट इज क्वाइट contradictory that crude oil is down last week almost 8%, whereas SPX was up 3%. Okay. तो नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक मार्केट अगर आपका ऊपर जा रहा है तो आइडियली एज पर द फंडामेंटल्स इकोनॉमी शुड बी डूइंग गुड. अगर इकोनॉमी अच्छा कर रहा है तो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन हाई रहता है, और क्रूड ऑयल का कंजम्पशन अगर हाई है तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना चाहिए. So something is indicating that the market rally is not fundamentally strong. Okay. अगर मार्केट रैली फंडामेंटली स्ट्रांग रहता था तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ सकता था. बट देन फ्रॉम द जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इंडिया पाकिस्तान का अगर कुछ इश्यू होता है, मिलिट्री एक्शन कुछ होता है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है. जस्ट टुडे देयर वाज अटैक ऑन इसराइल एयरपोर्ट. इसराइल के मेजर एयरपोर्ट के ऊपर यमन के जो टेररिस्ट है उन्होंने अटैक किया. दैट माइट ऑल्सो हैव सम इम्पैक्ट ऑन द क्रूड ऑयल. तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है, बट नॉट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल इश्यूज. ओके. वो भी एक फैक्टर हमको देखना पड़ेगा. अगेन यूएस 10 year बॉन्ड यील्ड, जस्ट एज डॉलर हैज रिकवर्ड, 10 year बॉन्ड यील्ड इज ऑल्सो रिकवरिंग. तो ये रिकवरी ये दिखा रहा है कि स्टॉक्स जो है, यूएस का जो स्टॉक मार्केट है, इट इज कमिंग क्लोज टू द रेजिस्टेंस. वहां से स्टॉक्स में डीप आ सकता है, छोटा करेक्शन आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, वी डोंट नो. And the DXY and gold and bond yield, these three things can go higher. So this is about the global market. Let's come back to the Indian market. So if we look at the week gone by for Nifty, uh, week gone by for Nifty was quite volatile, whereas the global market was bullish and there was good rally in the global market, but because of the Pakistan issue, Indian market was under a little bit under pressure. But still, we ended the week in green. Okay, the overall trend is green. Uh, so because the major reasons were the global bullishness and buying by the FPI. FPI did good buying in the Indian market in last couple of weeks. Overall, the week was positive and the trend is still positive. As I mentioned, foreign institutional investors did good buying and there was a inflow of around 17,400 into the Indian market. And this is in contrast to the selling of around 3,50,000 crore from October to April. Okay, तो अभी इनका थोड़ा रिवर्सल चालू हुआ है, एफआईएस का बाइंग चालू हुआ है इंडियन मार्केट में, so that is also supporting the market. If we look at sectors and stocks which performed well, JSW Energy, Maruti Suzuki, Mahindra and Mahindra, Adani Ports, and Reliance especially, these were the stocks which are very bullish. And then financial stocks actually are under little bit under pressure. Saturday there were negative results for some banking stocks, so BankNifty might see pressure in the next week. Geopolitical issue, everybody knows that this India Pakistan can trigger market correction, so we have to be careful about that. US farm roll non-farm payrolls data was positive, because of which there was good rally in the market, and then there is hope around US China trade negotiation. ट्रम्प ने जो बहुत सारे हेवी टैरिफ्स लगाए चाइना के ऊपर, उसमें थोड़ा भी रोल बैक हो रहा है, निगोशिएशन हो रहा है, सम काइंड ऑफ compromise might be reached. So that is basically making the market bullish in US and in China also. So let us look at the levels for Nifty. So as I said, Nifty closed in positive for the last week, around 24,346. Although there was this India-Pakistan issue still going on, but because of the FPI inflows and positive global flows, Indian market continued to be bullish. Trend is bullish and buy on tips should be the strategy.
If we look at the key technical indicators, Nifty on a daily is above all important technical indicators, right from 5-day to 200-day. All moving averages, it is bullish. RSI also it is bullish. Similarly, I mean, if all the moving averages are bullish, obviously the MACD will be also bullish. We'll look at this on the chart also. From the chart patterns point of view, Nifty 50 has broken out of a descending channel. Like I said, descending channel is a bullish channel, a bullish pattern, and it always gives you a positive breakout. Then there was a inverted head and shoulder which got formed, and a neutral triangle pattern is forming, okay, with a potential upside. So let us look at the chart for Nifty here, descending channel. This was a descending channel, if you can see here. Descending channel got formed, and we got a breakout in Nifty on 15th of April. Okay, 15th of April से निफ्टी पूरा बुलिश चल रहा है, बट ऑन द सेम लाइंस, ओके, अभी ये जो पैटर्न बना है ब्लैक लाइन अगर आप देखते हो यहाँ पे, सो दिस इज अ ascending wedge. Let us make it more clear. Okay, so this pattern is called as an ascending wedge. अगर यहाँ पे black देखते हो, so this is an ascending wedge, and there is a good possibility that Nifty might be bullish for Monday or Tuesday, opening of the week, and we might test around 24,600, और वहां से पुल बैक देके इट कैन कम डाउन ऑल द वे अप टू 23,900. ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है. तो लेट्स सी, अगर ये 23,600 650 को ब्रेक करके डेली क्लोज देता है, then we can see that it will give good rally also. So I am expecting Nifty to be within this range for the next week. Let's say roughly 24,700 to 23,850, ये range Nifty का रहना चाहिए, which is around 600-700 points. So that range is expected for Nifty for next week. Any questions here? Everybody with me? अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो. Clear. Thank you. So there is a question, should we do profit booking here? Should we do fresh buying here? So I definitely suggest some profit booking, क्योंकि क्या है कि मार्केट ने काफी रिकवरी दिया है. ओके, यू लुक एट द चार्ट्स, ये 21,700 से 24,600 तक आया है, कि ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स रिकवरी आया है. तो इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद में अगर आप कुछ भी एक्शन नहीं लेते हो, तो दैट्स नॉट रियली अ वाइज थिंग टू डू इन मार्केट. यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिप इन द मार्केट अगर ये 23,500 या 23,000 तक जाता है, विच इज अ हाई पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पे आप फिर से बाइंग करो. So if you are selling around 24,500, I'm not saying sell everything, but maybe some portion of your portfolio, and then buy something around 23,500. 1,000 points का मूवमेंट है, कैपिटलाइज करना चाहिए. वॉर, व्हाट implications on market if war starts? देखो, वॉर अगर स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत ह्यूज फॉल आएगा. बिकॉज इफ यू रिमेंबर my last session also, I had mentioned about this. Let us take a look. See, last week, 24th of April and 25th of April, there was quite a fall in the market. And this fall in the market was with expectation of some action by India, right? इंडिया कुछ मिलिट्री एक्शन लेगा ऐसा मार्केट में एक्सपेक्टेशन था, उसकी वजह से मार्केट फॉल आया. अभी सिर्फ एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये मार्केट फॉल आया, वो भी उस वक्त जब अदरवाइज ग्लोबल मार्केट वाज वेरी बुलिश. इतने ग्लोबल बुलिश मार्केट में अगर इंडिया का मार्केट फॉल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ एन एक्शन, तो अगर एक्चुअली एक्शन होता है तो मार्केट फॉल कितना हो सकता है. ओके, तो उसके लिए तो हमको रेडी रहना पड़ेगा.
We don't know whether India will really take military action or not. But अगर इंडिया मिलिट्री एक्शन लेता है तो मार्केट में बड़ा फॉल आएगा, वेनासडे बड़ा फॉल का निफ्टी जो है वो इजीली 23,500 टेस्ट कर सकता है फ्रॉम द करंट लेवल्स. आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ इट गोज ऑल द वे अप टू 23,000 ऑल्सो. तो मार्केट में अगर मिलिट्री एक्शन होता है तो निफ्टी 23,000 के आसपास डिप देगा. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी. दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए. 23,000 तक तो आराम से जाएगा अगर कुछ मिलिट्री एक्शन होता है तो. दैट इज द लेवल वी कैन एक्सपेक्ट ऑन द डाउन साइड. Okay, I have mentioned these levels here. So from the support point of view, immediate support for Nifty is 24,100, 24,250. Next support is 23,850 level. और अगर वो भी ब्रेक होता है तो एज आई सेड मेजर सपोर्ट इज 22,700 to 23,000. So these are the important support levels. From the resistance point of view, as I mentioned, 24,600, 24,650, we saw that on the charts. ये important resistance level है. अगर 24,600 क्रॉस होता है तो नेक्स्ट लेवल विल बी 24,800. 25,000 पिक्चर में आता है. देन यू कैन टॉक अबाउट ऑल द वे टू 25,300 ऑल्सो. सो रफली द रेंज in case the market remains bullish, 24,600 to 24,000 to 25,300, एक अराउंड 800 900 पॉइंट्स का रेंज निफ्टी दे सकता है अगर मार्केट बुलिश रहता है तो. एंड एज आई सेड अगर मार्केट गिर रहा है तो इट कैन गो ऑल द वे डाउन अप टू 22,700 23,000. अभी मार्केट किस सिचुएशन में गिर सकता है? देयर आर टू सिनेरियोज इन विच द मार्केट कैन फॉल. एक तो अगर इंडिया पाकिस्तान का कुछ इशू होता है, मिलिट्री एक्शन होता है बाय इंडिया, और अभी ये एफओएमसी का यूएस फेड का मीटिंग है नेक्स्ट वीक में. अगर वो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन देते हैं विच इज बैड फॉर द मार्केट तो उस सिचुएशन में भी मार्केट गिर सकता है. सो देर आर टू डिफरेंट सिनेरियोज जिसकी वजह से मार्केट गिर सकता है. सो लेट्स सी. एंड ऑन द चार्ट एज आई सेड मार्केट रेजिस्टेंस पे है. ओके, इट इज क्लोज टू द रेजिस्टेंस. सो डिप की पॉसिबिलिटी है टुवर्ड्स वेडनेसडे थर्सडे. सो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एज आई सेड बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं. 24,100 के लेवल पे अगर कोई बाय करता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 23,700, दैट विल बी अ गुड आइडिया. एंड इन केस निफ्टी डजंट गो अबाउट 24,600, अगर वहां से रिवर्सल लेता है तो वहां पे आप शॉर्ट भी ले सकते हो, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 24,800. सो बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हो. एंड इन केस ऑफ रिवर्सल यू कैन गो फॉर शॉर्ट ट्रेड्स ऑल्सो. सो विल डिस्कस अबाउट सम स्टॉक्स विच आर बुलिश, और उसमें आप लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हो या फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो. So before we move further, I would just like to give you a quick overview of the investment services of RGS Consulting. So we offer various investment services like portfolio management, consulting or advisory, then fund management or fixed return services. So if you are interested in any one of these services, please get in touch with me and we can discuss in detail. Okay, thank you. So these are the stocks with long build up currently. Reliance Industries, ICICI Bank, Bharti Airtel, Trent, Bharat Electronics. I mean, these are some of the large cap stocks which are bullish. There are a lot of more stocks. There are more than 50 stocks to be precise, which are currently bullish in the market. We can take a look at them. Go to Astra. And if we look at the futures built up, long built up, come on, medium term. Oh, there's actually only one stock which is having a proper long built up. So that shows that there is a little bit of market nervousness. Okay. And on the short term point of view, if we look at, so as per data, not many stocks are actually bullish. Okay.
तो ये दिखा रहा है कि मार्केट का डेप्थ नहीं है उतना. So this is a little bit of an alarming, not alarming, but it shows that you have to be little cautious in the market right now. I mean, even if we look at Reliance, for example, from the data point of view, ये शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है. शॉर्ट कवरिंग क्या है कि मार्केट में प्राइस तो बढ़ रहा है, बट दैट प्राइस इज इंक्रीजिंग बिकॉज जो शॉर्ट ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं. सो इट डजंट मीन दैट द स्टॉक इज सीइंग फ्रेश बाइंग. फ्रेश बाइंग कहाँ पे होता है? यहाँ पे आपको लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, जैसे एनसीसी में लॉन्ग बिल्टअप है, एसबीआई में लॉन्ग बिल्टअप है. बट अभी एसबीआई का सैटरडे को रिजल्ट आया और वो रिजल्ट खराब है, तो ऑल्दो फ्राइडे को ये बुलिश था, बट मंडे को देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एसबीआई विल गिव अ डिप. मारुति इज अगेन वन बुलिश स्टॉक. मारुति का अगर डेटा देखते हैं, मारुति में भी शॉर्ट कवरिंग हो रहा है. Just as there is short covering Reliance, so Maruti Suzuki is also having a short covering currently. तो ये बेसिकली शॉर्ट कवरिंग क्यों दिख रहा है? इसका वन डे ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है -0.91%. whereas वन डे प्राइस इज पॉजिटिव. प्राइस पॉजिटिव है बट ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, सो दैट इंडिकेट्स शॉर्ट कवरिंग. प्रॉपर लॉन्ग होने के लिए क्या है, ये दोनों पॉजिटिव चाहिए. अगर आप एनसीसी का एग्जांपल देते हो, तो प्राइस भी पॉजिटिव, प्राइस चेंज इज पॉजिटिव एंड ओआई चेंज इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दैट इंडिकेट्स दैट दिस इज हैविंग अ proper bullishness in the stock. So, not many stocks are currently bullish as per data. As per charts, they are. Okay. So, mixed signal है market में currently. You want to look at stocks with short built up, we can take a look. So, actually, long से short ज़्यादा है. Okay. So, there are a lot of stocks. In comparison the long list. The list of short stocks is more. There are 6 stocks which are having a proper short covering, which is proper short positions which are there. ACC, Bajaj Auto, Bandhan Bank, CDSL, Crompton and Shriram Finance. So these are the stocks which are bearish currently. Okay, इसमें आप short position ले सकते हो, या अगर आपके पास में ऑलरेडी पोजिशन है तो उसको आपको सेल आउट करके इनमें से निकल जाना चाहिए, एटलीस्ट पार्शियली निकल जाना चाहिए. तो एनी क्वेश्चन हियर? देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट गोल्ड. गोल्ड में क्या करना चाहिए? अभी गोल्ड तो क्या है कि शॉर्ट टर्म में बेरिश है करंटली, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट इज बुलिश. अब गोल्ड में लॉन्ग पोजिशन ले सकते हो. यू कैन कीप बाइंग गोल्ड ऑन डिप्स, क्योंकि अगर हम 3 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर का होराइजन देखते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट प्रॉफिट इन गोल्ड. So follow these guidelines for portfolio management. Always diversify. Buy in 1:2 रेशो. स्पेशली अभी ये इंडिया पाकिस्तान का जो ओवरहैंग है मार्केट के ऊपर, तो आपको थोड़ा कैश रिजर्व रखना चाहिए. यू शुड ऑलवेज, नॉर्मली भी आपको बफर रखना चाहिए, बट स्पेशली इन द करंट सिनेरियो कभी भी मार्केट में बड़ा डिप आ सकता है. सो टू cater टू दैट डीप और टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट डीप, आपके पास में थोड़ा अगर फंड्स ऑफ रिजर्व में रखोगे तो अच्छा रहेगा. नेवर टेक ओवर एक्सपोजर. कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा लगता है आपको, कितना भी अच्छा दिख रहा है, बट डोंट invest more than 10% to 15% of your overall purpose in one single stock. Okay, तो ये सब गाइडलाइंस अगर फॉलो करोगे आप, तो you will be able to make a good profit in the markets. So that's it from my side. Many of you are already part of it. This is RJS Alpha Group invite. So this is a WhatsApp group which we have, wherein we keep on sharing market updates and keep on sharing various trade ideas. The group में आप join करके, group follow करके, you can make decent profit. Okay, so a lot of people are already making some good money just being part of the group. So you're welcome to join this. You can suggest it to your friends and contacts. So thanks for joining. Wish you all happy and profitable trades and investments ahead. Kindly subscribe to our YouTube channel if you have not already done that. Follow me on Twitter. You are welcome to do that. So thanks again. Goodbye.